Hello, welcome to the online platform of Coachify. Now let's start with the discussion of today's newspaper, which is dated 10th of January. So जो सबसे पहली news है, that is majority of Indian cities far from clean air target, says the study. According to a recent study, India के जो targets हैं in the context of clean air, they are still very far. और हमारा एक जो ambitious project था, that is named नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये आपके 5 साल के लिए था, स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 टू 24. हाउएवर इसकी जो डेट है वो अभी एक्सटेंड हो गई है टू द ईयर 2026 एंड द टारगेट अंडर दिस प्रोजेक्ट वाज टू रिड्यूस particulate matter concentration to 40% by 2026 in total 131 cities. So ये जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, this is for around 131 cities. This is not for every city, ठीक है. And more importantly, आपके जो metro cities हैं like Delhi and Mumbai, they are still having a high level of particulate matters or a high level of air pollution. So यहाँ पे जो basics है that you need to study about is National Clean Air Program, ठीक है. This is important as in the context of static syllabus. Now the next news is, ये न्यूज़ आपकी रिपीट हो गई है. रश्मि शुक्ला टेक्स चार्ज एज महाराष्ट्र DGP. ये न्यूज़ पहले भी आई थी. शी इज़ द फर्स्ट वुमन to have this post in Maharashtra state and she belongs to the batch of 1988. ठीक है, चले. So it's a repeated news. Next. Okay, on the page number 4, the next news is India and UK signed 2 deals during defense ministers meet. अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, he will be going to UK and during his visit he signed 2 agreements. इसमें जो first agreement है that is an MOU or bilateral cadet exchange program, and the second thing is letter of agreement on defense collaboration in research and development. So one is related to cadets and another is related to research and development. And this news is important because this is the first visit in the last 2 decades. यानी last time जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर UK गए थे, that was in the year 2002. After 2002, this is the first time when Indian defense minister has gone to UK. and जो last time गए थे he was George Fernandez. ठीक है, और इसमें टोटल 2 एग्रीमेंट्स हुए हैं. फर्स्ट इज रिलेटेड टू कैडेट्स एंड द सेकंड इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ इज regulation by statute does not rob a varsity of minority status, according to Justice D.Y. Chandrachud. So there is an ongoing case regarding the minority status of Aligarh University. So उसके context में Supreme Court का verdict है कि if there is an university who is managed or regulated by an statute or they are having a different administration, so उनका जो minority status है वो आप नहीं ले सकते हैं. ठीक है, same. आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है उसमें से आपका जो आर्टिकल 30 है दैट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एंड इन दिस केस यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन रहेगा दैट विल बी एब्सोल्युटली मैनेज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी. आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, सेक्युलर हो सकता है, और किसी भी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं. एंड दिस होल डिस्कशन और डिबेट इज अबाउट द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. सो यहाँ पे आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और द फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, especially under Article 30. Okay, the next news is on the page number 6. Music maestro Rashid Khan passes away at 55 and he was the Hindustani classical singer and he passed away. So आपने उनका नाम ध्यान रखना है. And apart from that उन्होंने जो awards उनको मिले हैं that includes पद्मश्री, then आपके संगीत नाटक अकादमी अवार्ड in 2006, then he had पद्म भूषण. And along with this, as he belong to West Bengal, उनको बांग्लादेश वेस्ट बंगाल ने भी अवार्ड्स दिए थे. That includes बंग विभूषण and संगीत महासम्मान. So the name of the person and the awards and the year he passed away
दैट्स इट, दीज आर इम्पॉर्टेंट. इसमें सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन बनता है, ठीक है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है मोदी होल्ड्स रोड शो विद यूएई प्रेसिडेंट इन गुजरात, opens global trade summit. So it is about the vibrant Gujarat summit. ये आई थिंक दिस इज़ द थर्ड टाइम जब ये टॉपिक न्यूज़ में आया है. उससे पहले भी वाइब्रेंट गुजरात का डिस्कशन हो चुका है. एंड लास्ट एक न्यूज़ थी कि ही इज़ गोइंग टू हैव अ रोड शो विद द यूएई प्रेसिडेंट. सो द सेम न्यूज़ इज़ अबाउट द रोड शो which he had with the UAE president, and along with this he had bilateral meetings, or you can say bilateral talks with the president of Timor-Leste and the president of Mozambique. ठीक है. And the meeting or the summit is going on in Gandhinagar. उसके बाद the next news is Justice for Bilkis Bano. ये केस कल भी आया था आपके, and this case dates back to 2002 during the Gujarat riots. Then we are having a look at Project Tiger 50 years on. Here the basics of Project Tigers are important, और ये project इस साल आपके लिए इसलिए important हो गया because इसको लगभग 50 साल हो गए हैं, and this was initiated in the year 1973. When the project was initiated, there were around 9 tiger reserves, and at present there are 54 tiger reserves in 18 states. ठीक है. See, here it is mentioned in 1973 Project Tiger was introduced, and this comes under Wildlife Protection Act 1972, and all the regulations are done by the National Tiger Conservation Authority. The basics of the Project Tiger are enough that when the Project Tiger was initiated, the year, and at that time what was the number of the tiger reserves, at present what is the number of the tiger reserves, and the number of states we are having. और इसी के सिमिलर जो एक ऑनगोइंग टॉपिक है जो पिछले साल भी काफ़ी न्यूज़ में था, एंड इस साल भी उसकी एक न्यूज़ आ चुकी है, दैट इज़ योर चीता, जो हमने अफ्रीकन नेशन से मंगाया है टू द इंडिया, एंड दे आर located at present in the MP Kuno Palampur National Park में. So tiger and cheetah both are important. Okay, on the page number 12, the first news is Gabriel Attal picked as France's youngest and first openly gay prime minister. So France के जो president है, he has picked up Gabriel as the new prime minister, and he is the youngest one at the age of 34 after Elizabeth Born resigned. So recently France के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है, और जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नया प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया है. ही इज़ गैब्रियल. ही इज़ फ्रांस's youngest and first openly gay prime minister. So regime change हुई, regime नहीं कहेंगे, we'll say the prime minister has changed. और रिसेंटली हमने देखा था बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे. सो जहाँ भी आपके जो नेशंस हैं जहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई है, प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, दोज आर इम्पॉर्टेंट. Okay, the next news is Hezbollah targets Israel base to avenge killings in Lebanon. This is about Israel-Palestine war, and Lebanon is supporting Palestine. और जो लेबनान का एक militant group है Hezbollah, they are targeting Israeli base against Israel and in support of Palestine. और इसी के context में एक similar news थी that was about the Houthi rebels who has attacked in the Red Sea. They are also in support of Palestine, and they are protesting against Israel. The next news is Israel faces Gaza genocide case by South Africa at United Nations Court. Okay, so South Africa has submitted to International Court of Justice, which comes under United Nations, and the submission is about the genocide practice done by the Israel in case of the Israel-Palestine war. So South Africa goes against Israel, and considers the war as a genocide by the Israel in the Gaza against the Palestinians. So here the name of the nation that has picked up the submission, that is South Africa, and name of the court, that is International Court of Justice, and the basics of International Court of Justice, like where is the headquarter of ICJ located, which is in Netherlands, Hague, and the chairperson, who is the chairperson, or like who are the judges out there. So the basics of ICJ. And that's it. Chale. Next is amid a boycott campaign in India, Moizu wants China to top the list of tourist arrivals. Recently Maldives versus Lakshadweep हो गया है,
and it's ongoing dispute out there on the internet. Or at present, Maldives के जो president हैं, he is into China and addressing this Invest Maldives Forum, which is ongoing in Fuzan province. So आपने forum का नाम याद रखना है, that is your Invest Maldives, and the location where it is going on, that is your Fuzan province. So this indirectly reflects the strengthening of Maldives and China relations, in between the weakening of Maldives and India relations over the ongoing rift in case of the tourism of Lakshadweep versus the tourism in Maldives. Next news is former Prime Minister wins Bhutan polls clouded by economic strife. So अभी हमने देखा था बांग्लादेश में elections हुए हैं, and now these are the results of elections in the Bhutan on Tuesday that reports जो आपके former prime minister हैं sharing Tobgay, and his party has won again, and name of his party is People's Democratic Party. और उनको ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द सीट्स मिली है पार्लियामेंट में. नॉर्मली आपको सरकार बनाने के लिए यू नीड अराउंड 50% ऑफ द सीट्स, सो ही गेन 2/3 ऑफ द सीट्स. दैट मीन्स ही इज अगेन इन द पावर. रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं, एंड आपका जो नियर बाई स्टेट है दैट इज भूटान, उसमें इलेक्शंस हुए हैं, एंड भूटान इज लोकेटेड हियर. सो टेक्निकली वी हैड इलेक्शंस हियर एंड वी हैड इलेक्शंस हियर, तो आपने ध्यान रखना है. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द अग्निपथ स्कीम. Yes, this is a scheme about army. So mainly scheme जो है इसमें आपके under this scheme the soldiers are hired for a period of 4 years, और ये scheme आपकी 2022 में start हुई थी. The scheme is old, but the context of this news is जो आपके नेपालीज लोग हैं, जो गोरखाज हैं, जो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है that is on hold since 2020, because मतलब since COVID ये hold पे था. उसके बाद जब आपकी अग्निपथ स्कीम आ गई थी तब से ये hold पे. सो इट्स अराउंड 3 to 4 years कि आपके जो गोरखाज हैं उनका कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है. However, there has been an agreement between Nepal, India and Britain जो 1947 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें the agreement guides the recruitment of Nepalese to the Indian and British Army, and the agreement has still been followed. But recently, after the Agnipath scheme, their involvement in the Indian Army जो है वो अभी डाउटफुल है कि उनका सिलेक्शन होना है नहीं होना है, when they be recruited. So अभी ये चीज़ होल्ड पर है, and that is the news all about. Okay, this is repeated news. Oil tankers continue Red Sea movements despite Houthi attacks. ये पहले भी आया था कि आपके जो हौथी रेबल्स हैं, दे आर अटैकिंग इन द रेड सी अगेंस्ट पैलेस्टीन एंड इन सपोर्ट ऑफ इजराइल. सो इट्स अ रिपीटेड न्यूज़. ओके, आफ्टर दैट रिसेंटली स्पोर्ट्स अवार्ड्स वर अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट मुर्मू. नॉर्मली जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं वो आपको स्पोर्ट्स डे पे मिलते हैं, दैट इज़ 29th of August. बट दैट टाइम एशियन गेम्स वर ऑनगोइंग इन हाउस ऑफ चाइना, सो उस वजह से उस टाइम पे स्पोर्ट्स अवार्ड्स नहीं दिए गए थे. सो रिसेंटली वो अवार्ड्स दिए गए हैं, एंड इन दैट जो मेजर अवार्ड्स हैं, दीज आर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये 2 लोगों को मिला है. दीज आर चिराग शेट्टी एंड सात्विक सिराज, एंड बोथ आर द बैडमिंटन प्लेयर्स. उसके अलावा अलॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, जिसमें आपके क्रिकेटर मोहम्मद शामी इज ऑल्सो इन्वॉल्व. देन द्रोणाचार्य अवार्ड इज देयर. देन वी आर हैविंग लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड्स में आपके है मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, एंड दिस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 देन गोज टू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर. इसमें यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द अवार्ड्स, और जो मेजर अवार्ड्स मिले हैं वो किस किस को मिले हैं, अलॉन्ग विद दिस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. और in case of the Khel Ratna award, there is a cash prize of 25 lakhs. Or in case of Arjuna and Dronacharya award, there is a cash prize of 15 lakh. So you do not need to remember every single recipient of the award, but the popular ones and the major ones are required. इस पे there are chances कि आपको एक single question मिल जाए. And I think this is it for today's newspaper. Thank you.